Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the YouTube lecture of crop production and management. The first slide is about agricultural practices. The small pink box which you see in the left hand side is mentioning that human beings have evolved from monkeys, ape men, Adi Manav. So, when human beings were evolving 10,000 years ago, till that point, throughout history, humans, जो actually humans नहीं थे, ape men थे, the primitive man, they did not know how to do agriculture. They were called hunter gatherers. Hunter gatherer का मतलब either you hunt an animal and feed your stomach, or you gather fruits, you gather food items, you don't grow them, right? But from hunter gatherer, human being became a farmer, and agriculture started 10,000 years ago. It is one of the oldest things which we have mastered, because of which today 7 billion people on this planet can live happily and have enough food to eat, because we know how to grow our own food. और ह्यूमन बीइंग छोड़ के कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जिसको खुद का खाना खुद बनाना या मैनेज करना आता हो. सो दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन नेचर, बट वी ह्यूमन बीइंग्स हैव मास्टर्ड नेचर. सो 10,000 BC, मतलब अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 से ज़ीरो तक प्लस 10,000 साल पीछे. और so roughly 12,020 years ago, human was nomadic, Adivasi. But later, agriculture started and he became civilized. Then the textbook tells you the definition of crop. When plants of same kind are cultivated at one place on large scale, it's called a crop. And whenever there is an important thing written in the textual thing, I repeat it in red or blue fonts. What is a crop? Plant of same kind, cultivated at one place on large scale. India is a vast country. It's very big. And the climatic conditions of India are very different. For example, there is difference in temperature. Kashmir is a very cold place. Kanyakumari is a hot place. Gujarat is a dry desert. Himachal Pradesh is mountainous region. So temperature varies differently. Humidity, हवा में कितना ह्यूमिडिटी है या पानी है, that is different. All the coastal cities are very high in humidity. So Bombay has very high humidity, but Ahmedabad is a dry place, it has less humidity. There is difference in rainfall, of course, throughout India. And because of all this climatic changes, the crops which are grown are also different from each other. At every place in India, a different kind of crop is grown. That's called diversity. और ये बहुत अच्छी बात है, because of this diversity we get to eat a lot of variety. To grow food, we do agriculture, and agriculture means sowing crops. And there are two seasons in which maximum farmers sow their crops. The first type of crop is called kharif crops, and kharif crops are sown in rainy season. जून आ चुका है, रेनी सीजन शुरू होगी. सो जून टू सितंबर इज द रेनी सीजन इन ओवरऑल इंडिया, एंड वॉट एवर इज सोन इन दिस पीरियड इज कॉल्ड अ खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स है पैडी, मीन्स राइस, चोखा, चोखा ने पैडी कहवाय. मेज मीन्स मकाई, कॉर्न. सोयाबीन, ग्राउंडनट એટલે સિંગ, एंड कॉटन. दिस इज अ वेरी स्मॉल लिस्ट. जैसे हजारों प्लांट्स है जो रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं. एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स इज राबी क्रॉप्स. Rabi crops are sown in winter season. They are winter crops grown from October to March, and examples are wheat, गेहूं,
ગ્રામ એટલે ચણા, કાળા ચણા, લીલા ચણા, કઠોળના ચણા, છોલેના ચણા, lot of chana is available which we eat. Pea એટલે વટાણા, mustard એટલે રાઈ, and linseed is a type of seed from which we can make oil also and use in cooking. So remember this entire slide properly. It's very important. How do you remember it? There is a technique. PMSGC. PMSGC is one way to memorize the examples of kharif crops. पप्पा मने शुगर गमे छे, ये एक सेंटेंस याद रखने का. पप्पा मने शुगर गमे छे. पप्पा એટલે પેડી, મને એટલે મેઝ, શુગર એટલે સોયાબીન, ગમે એટલે ગ્રાઉન્ડનટ, છે એટલે કોટન. And similarly WGPML, વાઘ, પોપટ, મોર લખે છે. શું લખે છે ખબર નહીં. વાઘ એટલે wheat and gram, પોપટ એટલે pea, મોર એટલે mustard અને L લખે એટલે linseed. You can make your own, but this makes things funny, easy, and forever you will remember it. Now, basic practices of crop production. Basic practices of crop production में entire agricultural system, where to start and where to end, is shown. It's very interesting that how we grow our own food and what are the processes, what should we take care of, किसका ध्यान रखना है, etc. etc. So let's see the list quickly. Every topic is in detail in the next slide. First step, prepare the soil. Second step, sow the seeds. Third step, add manure and fertilizer. Fourth step, irrigation. Fifth step, protection from weeds. Sixth step, harvesting. Seventh step, storage. So let me try to explain you in a slightly different manner. This is land, soil basically, and soil is full of minerals, calcium, sodium, potassium, magnesium. Lot of nutrition is available in the soil, but the soil is not ready. You have to prepare the soil, and to prepare the soil you have to do the following things. Plow the land and till the land. Make the land even. Make the land flat. Once the soil is prepared, the next step is you sow the seeds. So seeds sow karte hain. Okay, let's have blue seeds. These are the seeds. Up. If the seeds are very deep, तो वो सीड सड़ जाएगा, बैक्टीरिया उसको खा जाएगी, वो बचेगा नहीं. If the seed is very much on the surface, तो वो सीड बर्ड्स खा जाएंगे, वो सीड्स बचेगा नहीं. So seeds sowing has to be at a correct height or a correct level. Okay, seed sowing हो गया correct height पे. Now we will add manure and fertilizer. Why? Because plants need something to eat. Manure and fertilizer plant का खाना है. So we are adding manure and fertilizer. खाना हो गया. अब पीने का time. We add water to the crops. That is called fourth step, irrigation. How do you supply water to your seeds? Is irrigation. And the minute you give it food and water, the plant starts to grow.
राइट? अब जब ग्रो कर रहे हैं तो साथ में देर आर ऑलवेज सम अनवांटेड थिंग्स विच ग्रो. अनवांटेड प्लांट्स साथ में उगते रहते हैं और ये अनवांटेड प्लांट्स को हमें मार देना है. एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड weeds. So going back to the list, first is prepare the soil, second is sow the seeds, take care of the food of the plants, and food of the plants is manure and fertilizer. Then take care of irrigation, means supplying water, and after that you have to protect the plants. And protection is from weeds, from insects, pests, etc. तुम सबको पता होगा, recently few days ago there was a big swarm of locusts or insect which came in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra region. They destroy the crops, they eat your crops, and they're very dangerous. So you have to take steps to protect your plants, protect from weeds, insects, pests, etc. Okay, प्रोटेक्शन हो गया. और प्रोटेक्शन करते करते ये जो वीड्स है वो हमने ख़त्म कर दी. हमारे प्लांट्स और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सब हष्ट पुष्ट बड़े बड़े हो गए, और हर एक प्लांट के ऊपर यू स्टार्ट गेटिंग योर क्रॉप. तुमने जो उगाने की इच्छा की है वो फाइनली उग जाता है. सो लेट्स से हम मकाई उगा रहे हैं. सो दिस इज आवर कॉर्न विच वी वांट एंड इट इज रेडी ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट. नाउ व्हाट टू डू? Harvest. Harvest means cutting the corn and taking it as food. And last is whatever you have harvested, you will store them, which is storage. So this is the overview of the chapter. Let's look at the first part in detail, preparation of soil. Preparation of soil is the first step of agriculture. कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले soil की तरफ ध्यान दोगे. What do you do in preparing the soil? You turn it and you loosen it. And whatever I have written here in red text, same thing is given in the textbook. I will highlight it for you. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and to loosen the soil. Why? उसके 3 अलग reasons हैं. ध्यान से देखना. दे विल नॉट टेल यू रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, तुम्हें खुद समझना है. रीजन नंबर 1, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप. रूट्स को डीप पेनिट्रेट करने को चांस मिलता है इफ वी टर्न द सॉइल, लूजन द सॉइल. सेकेंड रीजन, इट अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ. द रूट्स कैन ब्रीथ प्रॉपरली इफ यू डिग. एंड थर्ड, the loosened soil helps in growth of earthworms. Earthworms and microorganisms, microbes, ये दोनों grow करते हैं, which is a friend of the farmer. So remember the 3 reasons why turning and loosening the soil is important, so that the roots can penetrate deep, the roots can breathe easily, and earthworms can make humus for us in the loose soil. What is humus? Humus is when dead plants and animals, जब एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट मर जाता है तो नेचर में वो सॉइल में मिक्स होके डिकम्पोज हो जाता है. सो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज कॉल्ड humus, which is very very nutritious and necessary. So preparing the soil is turning and loosening, and 3 reasons why we do it. Continuing the topic, only few centimeters of the top soil supports plant growth. 10 मीटर का खड्डा नहीं खोदना है, सिर्फ टॉप लेयर थोड़ा सा इतना सा मिक्स करना है. टर्निंग एंड लूजनिंग of that top layer brings the nutrient rich soil to the top. नीचे का जो न्यूट्रिशियस सॉइल है वो ऊपर आ जाता है. તમે છાશ પીઓ તો છાશ થોડાક ટાઈમ પછી બેસી જાય, પાણી ઉપર આવી જાય, ઉપરથી પીઓ પાણી હલાવીને પીવાનું. હળદરવાળી પાણી પીતો તો ટર્મરિક वाला पानी, उसमें भी टर्मरिक बैठ जाती है. यू हैव टू ऑलवेज मिक्स इट एंड देन ड्रिंक. सॉइल हैज टू बी मिक्स्ड एंड देन एग्रीकल्चर हैज टू बी स्टार्टेड.
So turning and loosening brings the nutrition on the top. टर्निंग एंड लूजनिंग का टेक्निकल नाम क्या है? टेक्निकल नेम इज टिलिंग और प्लोइंग. बोथ मीन द सेम थिंग. And tilling and plowing is done by what tool? It's done by plows. Plows are made by with what material? Wood or iron. ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे जाके प्लॉ का डायग्राम देखेंगे. बट फिलहाल समटाइम्स द लैंड इज वेरी हार्ड, वेरी टफ, एंड प्लॉइंग टिलिंग इज वेरी डिफिकल्ट. देन व्हाट डू? You water it. Put some water in the empty farmland so that the soil becomes soft, and then you can till it. When you till, you have to make sure that big clumps are broken down into small clumps. Not only in agriculture, मेरे घर पे 200 pots है. I have a terrace garden, and every week or 10 days I have to dig the soil. पॉट में प्लांट हष्ट पुष्ट मस्त हो गया है, बट फिर भी हर 5-10 दिन में सॉइल को खोदना पड़ता है, सो दैट द रूट्स कैन ब्रीथ, द रूट्स कैन ग्रो प्रॉपरली, एंड बिग क्लम्प्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल क्लम्प्स. इससे न्यूट्रिशन सबको बराबर मिलता है, सारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन अच्छे से मिल सकता है. सो वी हैव टू remove the big clumps of the soil, and these big clumps have a scientific name, crumbs. और crumbs को तोड़ना चाहिए. तोड़ने के बाद you have to level the field flat. Why? Because if the field is not leveled, if it's uneven, तो एक जगह पानी भर जाएगा और एक जगह पानी पहुंचेगा ही नहीं. And we don't want unequal distribution of water. We want all plants to get same amount of water. Therefore leveling is important. और leveling कैसे करते हैं? By leveler. Leveler is another small tool which the farmers use. So going back to our summary, turning and loosening brings nutrition to the top. Tilling and plowing means turning and loosening. Plow is the equipment to plow the land or till the land. It's made up of wood or iron. It is used to break crumbs, and leveler is used to level the soil. Agricultural implements means tool used by farmers. First we will look at plow. Plow is used to till the land. Then we will see hoe, which is used to remove the weeds and loosen the soil. And then we'll see a cultivator, which is used for plowing and sowing. Let's look at the first implement, plow. A plow, if you can practice and draw the diagram, it's a very good thing. Science में diagrams के extra और special marks होते हैं, तो you have to always try. बहुत beautiful ये drawing class तो है नहीं, so you don't have to worry about beauty. You have to draw simple basic diagram with labeling. तो ये लकड़ी की डंडी जो है, this one, that's called beam. और beam का क्या काम है? Beam is where the गाय हमारी और दूसरी गाय या बुल or whatever you call it is here. भाई साहब गुस्से में. So beam is which rests on the neck of the animal, which the animal pulls. After beam, there is a long straight rod called plough shaft. Yeah, this is plough shaft, and plough shaft is attached to this one called plowshare. And plowshare के टॉप पे होता है हैंडल पकड़ने के लिए. द फार्मर राजू राम प्रसाद ठाकुर is
होल्डिंग इट। तो ये हो गया हैंडल, धोती पहना देते हैं। एंड दिस इज मेड अप ऑफ आयरन, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, ताकि जमीन को काटने में आसानी हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लॉ। लेट्स क्विकली रीड। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस ancient times for tilling the soil and adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil। चार चीजें कर सकता है ये: till the soil, add fertilizer, remove weeds, turn the soil। It's made up of wood. It is drawn by a pair of bulls or other animals like horse and camel. It contains strong triangular iron strip called plowshare। ये रहा plowshare. This is the triangular iron strip। The main part of the plow is long wood which is called plow shaft। ये रहा सबसे लंबा लकड़ा। There is a handle जो हमारे रामू काका पकड़ के खड़े हैं। The other end is beam जो गंगा और जमुना हमारी दो गाय के नेक पे, नहीं गंगा जमुना नहीं, बुल है, राम और श्याम। So beam is placed on the bull's neck and one pair of bulls and one man can easily operate this। This is indigenous tool, मतलब local, made in India, हजारों साल से यूज कर रहे हैं हम इसको। But nowadays iron plows are used because they are easy, durable, tough with long life। Second tool which we'll study in detail is a hoe। आपने आई एम श्योर 100% एक छोटा सा ऐसा देखा होगा जिसमें टूल देखा होगा जिसमें एक लकड़े का डंडा होता है और वो लकड़े के डंडे के अराउंड मेटल का एक फ्लैप होता है, सो दैट यू कैन गैदर द सैंड और सीमेंट एक्सेट्रा। एंड दिस इज अ हो। बहु सिंपल फ्लैट मेटल नो टुकड़ो। बट ये जो कॉम्प्लेक्स साइफाई सा डायग्राम बताया, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। इट्स एन ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड। लेट्स फर्स्ट लुक एट टेक्सचुअल हो। हमारे दो बुल राम और श्याम वो यहाँ पे आएंगे। So the bull or the cow is placed here, one on the left side, another on the right side, and after placing them they start to move in this direction। This is the grip. Grip means a handle which the farmer is going to hold। This is the bent plate which is made up of metal, and this bent plate is what works the best as a hoe। So hoe में क्या होता है, what is hoe used for, that we will see now। Hoe is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। फार्मर के ऊपर है उसको प्लॉ यूज करना है या हो यूज करना है। ही कैन टर्न द सॉइल, लूजन द सॉइल एंड रिमूव द वीड्स। व्हाट इज वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए उनको हम निकाल के फेंक देते हैं। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ द एंड्स and it works like a blade and it is pulled by animals, that is called hoe। And third equipment is cultivator। We are living in modern times and plow and hoe are ancient tools। Modern tool is a cultivator and you see cultivator, plow में एक blade होती है, cultivator में कितनी blade है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 to 10 blades, sometimes 12 and sometimes 15 blades are there।
तो जो फार्मर 2 बुलक लेके एक लाइन ड्रॉ करेगा उतने टाइम में 15 लाइंस ड्रॉ हो जाएगी. So cultivator is an amazing tool which is attached to the tractor and used. Tractor driven machine for quick result, saves labor मतलब hard work and saves time. Next, second step of agriculture is sowing seeds. And before you sow seeds, you have to choose the good seeds. And how do you know seeds are of good quality or not? How do you know that seeds will give high yields or not? Is by doing a simple experiment. Seed अच्छी है कि खराब जानने के लिए you have to do this small activity where you take a glass of water and in that glass put the batch of seeds. So तुम्हारे पास एक बड़ा 50 किलो का बैग है, you are a farmer and you want to test कि seeds अच्छे हैं कि बुरे. एक मुट्ठी भर सीड्स पानी में डाल दो और पानी में डालने के बाद some of the seeds will settle down and some of the seeds will float. Those seeds which are floating, they are bad in quality, and those seeds which are settled down are good in quality. तो इंस्टेंटली पता चल जाता है कि एक मुट्ठी में कितने बैड है और कितने गुड. अकॉर्डिंगली एक बैग में कितने बैड और कितने गुड. बैड यू कैन थ्रो अवे एंड गुड you can use for growing your crops. When you sow seeds, there is a small tool or a machine available, and that machine or that traditional tool is called funnel. The shape is funnel. ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, this triangular shaped thing, this is called a funnel, and inside the funnel you put the seeds travel down and directly goes to the soil. That's a traditional tool for sowing seeds. Sometimes there are 2 or 3 pipes having sharp ends, and these ends are pierced into the soil which places the seeds there. So funnel के नीचे त्रिशूल जैसा बन जाता है, so that whatever seeds are there, they get divided into 3 parts. ऐसा कुछ. So the seeds from the funnel enter here and then they are divided into 3 parts. तो 3 रो एक साथ seeds can be sown. That's the traditional tool for sowing. But this is very, very slow. If we want to speed up the process, then we use a seed drill. Once again, a modern equipment which is attached to a tractor. क्योंकि इतना बड़ा इम्प्लीमेंट, ये 10 फुट का होता है, तो 10 फुट का इम्प्लीमेंट 50, 60, 100 किलो वजन होता है. ओनली ट्रैक्टर कैन पुल इट. सीड ड्रिल में instead of 1, 2 or 3, there are multiple outlets for seeds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 जगह से एक साथ seeds are sown and all the seeds enter from this central pipe and they are distributed everywhere. Why is this used? और what are the benefits of a seed drill? ऐसा क्वेश्चन पूछा तो तुम क्या लिखोगे? ये देखो टेक्स्ट बुक के अंदर सब है. This sows the seeds uniformly. Benefit number 1. At equal distances. Benefit number 2. At equal depth. Benefit number 3. और इसका डिजाइन ऐसा है that after sowing, the seeds get covered with soil. दाना डालने के बाद अपने आप सॉइल उसके ऊपर आ जाता है, सो दैट बर्ड्स कैन नॉट ईट द सीड्स. वरना बर्ड सीड साफ करेंगे और तुम्हें कोई क्रॉप नहीं मिलेगा. दिस प्रोटेक्ट्स द सीड्स ईटन बाय बर्ड्स एंड सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. ये 4th और 5th पॉइंट था. तो फटाफट समरी देखते हैं.
Seed drill is used with a tractor for uniform sowing, sowing at equal depth, equal distance, protect from birds, saves time, saves labor, learning. Right? Seed drill. Look at this wonderful result. This beautiful flat even growth of plants is thanks to the seed drill. जंगल में ऐसा नहीं दिखेगा बिकॉज जंगल में सब कुछ अपने आप कहीं भी कैसे भी उग जाता है बट दिस इज अ फार्म और फार्म में फार्मर यूजेज अ सीड ड्रिल so that beautiful evenly spread crop can be grown. Why is good distance necessary? To prevent overcrowding. Overcrowding is not a good thing. इसलिए बीच में देखो यहाँ पे ये पट्टे रखे हैं. You don't want the plants to be too close. तो 5-5 प्लांट्स की लाइन है, फिर चलने के लिए जगह है, so that sunlight, water, nutrition can reach nicely. Plants get good light, good water, and good nutrition. So by using seed drill, you can take care of the plants in a better way. Now coming to manure and fertilizer. This is one of the most important topics of the chapter. Manure and fertilizer, they both is kind of food for the plants. प्लांट्स क्या खाता है? मैन्योर और फर्टिलाइजर. प्लांट क्या पीता है? वाटर. द सब्सटेंस विच आर एडेड इन द सॉइल, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrition is called manure and fertilizer. Why is it added? So that plants can grow healthy, wealthy, big and can give us more food. क्या होता है न्यूट्रिशन? द सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स. मिनरल मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन. There's a lot of things which the soil gives to the plant and that comes from manures and fertilizers. और ये न्यूट्रिशन नहीं मिला तो प्लांट ग्रो करेगा नहीं. These nutrients are essential for growth of the plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in same field. Crop 1, crop 2, crop 3, crop 4. Soil को न्यूट्रिशन दिए बगैर तुम बस क्रॉप उगाए जाओगे, one day your crop will not grow. Why? Because your land will become infertile. Fertility, power of the land goes away. Why? Because you kept on growing crop. तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए that after you grow one crop, you have to give manure fertilizer to the land. Then second crop, manure fertilizer. Third crop, manure fertilizer. So manure fertilizers both are very very important, वरना land dead हो जाएगा. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients and therefore farmers have to add manure and replenish the soil. Levels वापस लेके आना है, energy वापस लेके आनी है of the nutrients, and this process is called manuring. Manuring means giving manure to the plants. Improper or insufficient manuring results in weak plants. तुमने मैन्योर दिया है लेकिन कम पड़ेगा तो प्लांट्स अच्छे नहीं उगेंगे. बहुत ज़्यादा होगा तो भी अच्छी बात नहीं है, और जो चाहिए वो ही होना चाहिए. कुछ और खिलाओगे तो भी मतलब नहीं है. सो इट्स अ बिग साइंस. फार्मर्स नो मोर अबाउट इट, दैट व्हाट मैन्योर एंड हाउ टू गिव मैन्योर टू द प्लांट्स फॉर बेस्ट ग्रोथ. So quickly looking at the summary of what we learned in this slide. Continuous cultivation reduces soil quality. Extra things are added to the soil to increase the nutrition, which is called manure or fertilizer. Manure is an organic substance, मतलब natural, biodegradable, decomposable, not artificial. Manure is an organic substance obtained from decomposition of plants and animal wastes. जब एक प्लांट मरता है
तो उसकी डेड बॉडी को हम दफनाने जाते हैं? नहीं, उसकी डेड बॉडी सॉइल में मिक्स हो जाती। जब एक एनिमल मरता है, देयर ऑल्सो वी डोंट गो एंड डू एनीथिंग, वी बरी इट इन द सॉइल so that it mixes with the soil, and that plant animal increases the fertility of the soil. अंदर पड़े पड़े plant and animals decompose, and this decomposition is caused by microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure, जो पहले भी सीखा था in 7th 6th standard as vermi composting. So vermicompost or manure means the same thing, where dead plants and animals are mixed with the soil and manure is prepared. Look at the summary. The summary is very, very important. Manure is organic and made from plants and animals. Plants and animals which are dead are put into pits, એટલે ખાડો ખોદીને દાટી દેવાનો, ઉપર માટી નાખી દેવાની. After few months they will decompose. Example of manure is vermicompost. Compost nahi, vermicompost. And manure improves soil texture, water retaining capacity and nutrients. So remember the three things. ये कहीं नहीं लिखा है. Soil texture improve करती है, water retaining capacity and improves the nutrients. That's why we add manure. And this is clearly given in the textbook. Advantages of manure. Organic manure is better than fertilizer because, 2-mark question, why is organic manure better than fertilizer? Number 1, it enhances the water holding capacity. पानी पकड़ के रखने की कैपेसिटी बढ़ाता है. It makes the soil porous so that gas can go inside, so that roots can breathe easily. Roots को सांस लेनी है तो ऑक्सीजन नीचे तक पहुंचेगा तब सांस लेंगे, और ऑक्सीजन नीचे कब पहुंचेगा? When you add manure to your farm. Third, it increases the number of friendly bacteria or friendly microbes. And fourth, it improves the texture of the soil. So a quick summary: advantages why manure is better: water holding capacity increases, soil becomes porous, gases can easily go in, it increases the friendly bacteria and improves soil texture. By heart this as a 2-mark answer. Look at this. There is an activity here, and the activity says that you have to add cow dung, urea and nothing in 3 pots. एक में cow dung, एक में यूरिया और तीसरे में कुछ नहीं. Cow dung एक नेचुरल फर्टिलाइजर है. इट्स वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिशन और वो हर फार्मर यूज करता है. यूरिया एक केमिकल है, वो भी न्यूट्रिशियस होता है, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ केमिकल, इट हैज साइड इफेक्ट्स. एंड एडिंग नथिंग is a bad choice. सिर्फ सॉइल लिया है थर्ड पॉट में. Now we have to put some seeds and try to grow them. After 7 to 10 days, what do we observe? We observe जिसमें काउडंग था उसमें plants are most healthy. जिसमें यूरिया था उसमें भी plants are there but they are not that strong and healthy. और जिसमें कुछ नहीं था उसमें no plants are growing because this soil is zero in nutrition. That's the activity, and this proves that cow dung is highly nutritious. उससे एक लेवल नीचे यूरिया और उसके एक लेवल नीचे is just soil, and just soil से तुम्हारा प्लांट कभी हेल्दी वेल्दी नहीं बनेगा. So we have seen manure, it's good, natural, use it as much as you like. But fertilizer, जो उसका cousin है, it's not natural. So let's learn about fertilizers from the summary. Fertilizers are basically chemicals which are made in factories. And when you make chemicals in the factories, you add something. They add nitrogen, phosphorus, potassium. The 3 big things which the plant needs
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वो ऐड करते। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड एनपीके। तो फार्मर्स मार्केट होता है जो सिटी में नहीं है, बाहर होता है। फार्मर्स मार्केट में जाके, शॉप पे जाके आप यूरिया मांग सकते हो, 50 किलो यूरिया देना, 100 किलो अमोनियम सल्फेट देना, 5 किलो पोटैश है। तो इट्स लाइक शॉपिंग फॉर medicine. Farmer goes and shops for fertilizers and he can buy in bulk and add to the farm. Why is he using fertilizer? क्यों chemicals यूज कर रहा है? Because भले chemical है, उसके benefits बहुत सारे। The first benefit, it gives better yield, ज़्यादा crop, more wheat, more paddy, more maize, વધારે મકાઈ, વધારે ઘઉં, વધારે ચોખા મળે if you use fertilizer. But it comes at a cost. हर अच्छी चीज का एक साइड इफेक्ट होता है, और इसका साइड इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। बिकॉज there are chemicals, whenever you add water to your farm, the plants will grow, but extra chemical will pollute the groundwater or river water, and it will pollute the soil also. That's why too much fertilizer should never be used. Remember, too much manure is okay, but too much fertilizer is really dangerous. Last slide, let us look at this summary about fertilizer versus manure. Fertilizers are man-made, artificial, inorganic salts, but manure, man-made का opposite, natural. एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं, वो कैटल डंक और प्लांट रेसिड्यू में से बनाते हैं, वो केमिकल नहीं है, नेचुरल है। सेकेंड, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज आर्टिफिशियली, बट मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि वो फार्मर खुद बना सकता है। फर्टिलाइजर्स आर एक्सपेंसिव। थर्ड, fertilizer does not provide any humus to the soil. Remember humus? Dead plants and animals mixing with the soil. वो fertilizer से नहीं मिलता है, but manure provides a lot of humus, and humus is very necessary. इसका मतलब using manure is almost compulsory for the farmer. Fourth point, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium. बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है बिकॉज फैक्ट्री में बनाया है, बट मैन्योर हैज़ लेस न्यूट्रिएंट्स। एक एप्पल खाओ तो 1 ग्राम विटामिन ई मिलेगा, एग्जाम्पल है, एक एप्पल में 1 ग्राम विटामिन ई, बट फैक्ट्री में जाके 100 एप्पल मिक्स करके 100 ग्राम का एक टैबलेट बना सकते हो। तुम टैबलेट खाओ, तुमको 100 एप्पल्स की शक्ति मिलेगी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर बहुत सारा चाहिए, ट्रैक्टर भर भर के मैन्योर चाहिए, बट फर्टिलाइजर इज जस्ट 1 बैग ऑफ 50 kg, तुम्हारा पूरा फार्म कवर हो जाएगा। सो दोनों चीज़ अच्छी भी है, दोनों चीज़ डेंजरस भी है। सोच समझ के यूज़ करोगे तो लाइफ विल बी हैप्पी एंड द फार्मर एंड द क्रॉप विल बी हेल्दी।